So in case of breadth first search, you actually explore all the nodes on a certain level, and then unless all the nodes on a certain level are evaluated, you don't move to the next level. Okay, so let me uh, share the screen with you where we'll see that how the search strategies actually work. Okay. Right. Okay. Uh, yeah. So in case of breadth first search, the data structure that you use to implement is a queue. Okay, so that means that whatever enters in the queue first leaves the queue first. Okay. So primarily, a person that enters the queue first leaves the queue first. Okay, so this is the way the breadth first search is actually implemented. Uh, Whenever you evaluate a node, you actually add the children of that particular node after evaluation is complete to the queue. Okay, so if you have a node, you evaluate a node, and then the children of that particular node in a specific order are primarily uh, added to the queue. So here, if one is evaluated, then after one is dequeued, that is after it's being evaluated, 2 and 3 are added to the queue. Okay, and then 2 is evaluated, and as soon as 2 is evaluated and is taken out of the queue, the children of 2, that means 4 and 5, will be added to the queue. Okay, so so you, and then 3 will be evaluated because that was added first in the queue, and then once 3 goes out, the child of 3 will be added to the queue. So the evaluation is actually preferred or done level to level. So this is what happens in case of breadth first search, whereas in case of depth first search, if you select a particular direction, then you go along that particular direction until you reach the leaf node. Okay, and once you reach the leaf node, only then you change the direction. Okay, so once you reach, so you evaluate 1, and then 2 is evaluated, and then 4 is evaluated, and 4 is the leaf node, and at this point you change the direction and you evaluate 5, and then you move to 3 and evaluate 3, and then you move to 6 and evaluate 6. Okay, so this is a depth-wise sort of evaluation, and that depth-wise evaluation is primarily implemented in the form of a stack. Okay, a stack is implemented. Okay, so a stack would mean that whatever so the one that enters at the end pops out first. Okay, so that is what the depth first search implementation would look like. Okay, so
So you have, let's say, if you have an say some sort of a representation of your search problem in this way, then the evaluation would be done in this particular fashion. Okay. So this way the evaluation is done and the implementation is done in the form of a stack. Okay, and that's something that we have discussed last time. Okay, let's talk about the cost associated with these search strategies. Okay, so the cost associated with these search strategies um, would be that the cost is the total cost is of any search. If you are at a particular node which is f of n, the total cost that is associated with that is primarily the path cost in case of both of these search strategies. Okay, so we'll say that I'll just explain that why we are writing f as a total cost, because if when we'll discuss intelligent search strategies or heuristic search strategies, we'll see that the total cost actually contains two components, and we'll discuss that later on. So in case of the blind search strategies, the cost associated with the search consists of the path cost only. So that means that if you are at a particular node, so you start from your start node, okay, and you are let's say at a particular node, and let's just call this node as n. So if you are at n, then the so you have actually evaluated all the nodes either depth wise or breadth wise, and you have reached a particular node n. Then the cost of or the path cost associated would be the cost that you have incurred in reaching that particular node from the start node. So if this is your present state, okay, so you are here at this particular node, right, and that's the nth node on your graph or a tree, then g of n would represent the path cost. Okay, so this g of n would be the path cost. That means that the cost that you have incurred in reaching that particular node, which is the nth node. Okay, so in case of breadth first and in case of depth first, the traversal cost from one node to another node between two consecutive nodes is considered to be constant, and we assume that constant to be 1. Okay, so in this particular scenario that is shown in the slide, um, and if you are, let's say, assuming um, any search strategy, then you have moved from your start node to your nth node, and there is one intermediate node on the path. Okay, so therefore the total cost incurred from S to N would be 2 in this particular case. Okay, and assuming that the cost between two particular nodes is a constant. Okay. Yes, Ibrahim, you're right. So this is for all blind search strategies, right? The cost is this that f of n, which is represented as the total cost, that is equal to g of n, which is the path cost. Okay, so path cost is in other words, is, as it is clear from the name, is the cost that you have incurred, or the path the cost that you have incurred in reaching a particular node. Okay, so you are, let's say, if you are if it is a navigational agent, then you are present at a particular location on your map, and you started from a particular location on the map. So the cost that you have incurred from your start position to your present position is what you call as the path cost. Okay, and that is represented by g of n. And in case of BFS and in case of any other blind search strategy, this is the cost that you can actually calculate.
ओके, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है इसके अंदर दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो कॉस्ट है दैट इज कांस्टेंट. ओके, सो यू assume to be and that is basically an assumption, so that is actually constant. So between two consecutive nodes the cost is associated to be one. Okay, so if you move between two nodes, so this would be the cost associated here. So let's say कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, so if this is your nth node, right? So the cost associated and this is your start node, then the cost associated here would be this cost, and that is primarily 3. Okay, so 3 is the cost if this is your nth node. So from S to N, because you are present at N, therefore this would be the total cost would be 3 in this particular case. Okay, G. So there are uh, okay, okay, I'll come to the heuristic search, and that in that you have another component also, and we'll discuss that in a while. Okay, heuristic cost के अंदर वो component क्या है? What is the component in case of the heuristic cost? So first let's complete this first, and then we'll move on to the heuristic cost. Right. So I hope this is clear. So in other words, it's always backward looking cost. Backward looking cost का मतलब ये है कि आप अगर किस नोड पे हैं, आप हमेशा अपने स्टार्ट नोड की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि आप स्टार्ट नोड से कितना दूर है. So स्टार्ट नोड से आप जितना दूर होंगे, that would primarily be your search cost, that is the path cost. ठीक है. तो सो इट्स ऑलवेज बैकवर्ड लुकिंग. आप अगर किसी लोकेशन पे मौजूद हैं, यू ऑलवेज रेफर बैक टू योर स्टार्ट नोड, और यू ऑलवेज लुक टुवर्ड्स योर स्टार्ट नोड. ठीक है, और वहाँ पे यू ऑलवेज हैव दिस सॉर्ट ऑफ बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच. ठीक है, सो वी कॉल इट द बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, और एन अप्रोच इन विच यू ऑलवेज रेफर टू योर स्टार्ट नोड. ठीक है. सो इसमें ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज के अंदर लुक अहेड स्ट्रेटजीज जो है वो नहीं है. लुक अहेड स्ट्रेटजीज आर इज अ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी जिसमें आप गोल की तरफ फोकस किए होते हैं. ओके, there is another type of search strategy which is primarily a variation of breadth first search, and that is what you call as a uniform cost search. Okay, so uniform cost search is a variation of breadth first search, और उस यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर द कॉस्ट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज नॉट कांस्टेंट. ओके, सो इन दैट केस लेट्स से कि मैं अगर इस नोड पे हूँ, दिस इज माय स्टार्ट नोड, and I have the option of moving to these three nodes. Then in case of breadth first search क्या होगा? ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर ये होगा कि आपकी ये कॉस्ट जो हैं, इफ़ यू मूव फ्रॉम लेट्स से S to 1, आपकी कॉस्ट 1 है. ठीक है. अगर आप 2 पे मूव करते हैं तो आपकी कॉस्ट हो सकता है 3 हो. ठीक है. और अगर आप 3 के साथ कनेक्टेड है थर्ड नोड, हो सकता है आपकी कॉस्ट यहाँ पे 5 हो. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो पाथ कॉस्ट है, या जो कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन मूविंग फ्रॉम एस टू अनदर नोड इज नॉट कांस्टेंट. that is different. I mean, that varies. So in this case, uniform cost search strategy ये है कि आपकी path को, so let's say if you are present at 1, if your nth node is 1, then the cost that you have incurred is 1. If your nth node is 3, then the cost you have incurred is 5. So uniform cost strategy के अंदर what you do is that you actually always go for the lowest path cost. So अगर मैंने आपको आपने traverse करना है tree, then S से आप 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे या 3 पे जाएंगे, you always prefer a node that has the lower
path cost. So lower path cost is for node 1. So you'll always move from S to N. So you always select a node for traversal or for moving the one that has the lowest cost. And that is what the uniform cost is. So in this case, what happens is that so what type of implementation or how would you implement breadth first search के लिए तो आपने क्यों implement कर दी. तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है उसके लिए आप क्या implement करेंगे. I mean किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे. Anyone? Okay, yes. So you implement a priority queue. That means कि आपके पास standard queue नहीं है, आपके पास एक priority queue है. Priority queue would mean that you'll the head of the queue पे वो node होगा जिसकी path cost सबसे कम है, ठीक है, जिसकी path cost सबसे कम आ गया, जिसकी cost of traversal सबसे कम आ गया. So इस केस के अंदर लेट्स से कि अगर इसकी एस से 1 की कॉस्ट 4 होती तो इस केस के अंदर जो प्रायोरिटी क्यू था, जो प्रायोरिटी क्यू में नोड नंबर 2 जो है दैट वुड हैव बीन एट द हेड टॉप ऑफ द क्यू जो है वो नोड 2 होता एंड देन आपके पास नोड 1 होता और फिर आपके पास नोड 3. ठीक है, तो इस तरह से आप करते. वेयर एज इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते थे और आपके पास स्टैंडर्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जो नोड जिस तरह से पड़े होते वो 1 2 and 3 if the left node is preferred. तो इस तरह से आपके पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर होता है. लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट के अंदर आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है इन टर्म्स ऑफ द लोअर कॉस्ट. तो इस केस में अगर लोअर कॉस्ट 2 है तो 2 नोड जो है वो at the top होगा. Okay, so this is what you have in case of the standard search strategies. Okay, we have gone through few examples last time जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये search strategies जो हैं वो काम करती हैं. So let's just I'll share another set of slides with you and then we'll see कि जी किस तरीके से इसको आपने करना है. अच्छा, in case of अच्छा we have also there is another type of search strategy which is a combination of breadth first search and depth first search, and that search strategy is what you call as the iterative deepening search strategy. So iterative deepening search strategy kya hai? It's actually the benefits of BFS and DFS are combined together. DFS का हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि you select a path or a branch or and then you go all the way down to the leaf node on that branch. Okay, so if you select, let's say, the left branch, so you go all the way down to the leaf node and before you change the direction. So यहाँ पे let's say if this is the leaf node, then from here you will actually change the direction and move on to the other branch. Okay, so इस case के अंदर there might be a possibility that you end up moving along a particular direction infinitely. Okay, so ये भी possibility है कि आप एक ही depth में move करते जाएं from level to level and without say returning. So how to make it more efficient? So the idea here is that you limit the depth. Okay, so आप depth को limit कर. So you will say that you will explore a certain branch only to a particular depth और उस depth तक आप उसको explore करेंगे और उससे आप उस depth से नीचे नहीं जाएंगे. So let's say कि if I limit myself to depth to level 3, that means कि if my start node is at level 1, level 0, तो
तो मैं लेवल 0 से लेवल 1 पे आऊँगा, लेवल 1 से फिर लेवल 2 पे और लेवल 2 से फिर लेवल 3 पे, और जैसे ही मैं लेवल 3 पे पहुँचूँगा देन आई विल primarily change my direction. I'll basically move back to another direction, और एक और direction पे move करूँगा, rather than I go to the go through all these different levels. ठीक है, so this is what you call as the depth first, sorry, the iterative deepening approach. तो iterative deepening के अंदर breadth first search और depth first search की in a way combination है. So you fix a level. I'll just see if so you fix a level and you actually move only to a particular level. So here I'll just show you depth iterative deepening के अंदर, let's say as I told you कि you fix a level at depth 3. So आप कहते हैं जी depth 3 से नीचे मैंने इंसर्च नहीं करना. So depth 3 तक अगर मुझे गोल मिल गया तो ठीक है, on a particular direction, and then I'll change my direction. So यहाँ से आप ऐसे start होंगे, all the way you will go to your last node on the leftmost branch or the rightmost branch, जो भी आपने prefer करना है, up to depth 3. And once you reach depth 3, उसके बाद you will change direction, और आप depth 3 से नीचे नहीं जाएंगे. So you will not go beyond depth 3. ठीक है, so depth 3 पे जाने के बाद you will come back to the parent node, और direction आप उसकी change करेंगे, and then you will explore all the nodes from depth 0 to depth 3. तमाम nodes को आप explore करेंगे, and you will try to find out कि क्या गोल इस लेवल तक मौजूद है या नहीं है. और अगर गोल लेट्स से डेप्थ 3 तक मौजूद नहीं है, you can increase the depth. Okay, so you can then say that okay, I'll explore up to level 5 या depth 5 तक मैं उसको explore करूँगा. So then you will basically be exploring another set of nodes जो कि 3 और 4 के दरमियान है. So this is how you can actually make this search more efficient, और उसके अंदर जो incompleteness है in case of the DFS, you can try to cater for that incompleteness in this particular fashion. Okay. Okay, how would you decide a particular depth? With depth, Shayan, you can decide a particular depth based upon your experience. So, मिसाल के तौर पे आप कोई word अगर search कर रहे हैं ना, so you have a dictionary, and word could be a combination of multiple alphabets. So you can always say that, let's say you are searching for a 3-character word or a 4-character word. So you can limit your obviously search up to 4th level, क्योंकि आपका जो वर्ड है वो 4 कैरेक्टर्स 4 अल्फाबेट्स या उससे कम अल्फाबेट्स के ऊपर मुहित है. So if your word is say of a particular length, so you can use that information to limit your depth. So similarly जो problem है, you can have a look at that problem and then decide कि आपने किस depth तक जाना है और कहाँ तक आपने search करना है. ठीक है, so the problem could also assist you in defining के किस तरीके से करते हैं. And if you are not sure, then you can always like have an upper limit, and between that you can always increment the depth. ठीक है, so initially you can have an idea, say depth 3 तक आपने explore करना है, और if you don't find the goal, then you can say that okay, let's move to the next level, and then move to the next level. So this may be there is an element of uncertainty and indecision which is present, which you have to cater. ठीक है, so that's like one way of solving this incompleteness problem, or say infinite search को आप किसी तरह से finite search के अंदर तब्दील कर सकते हैं. Okay, so that's primarily the type of searches which you have here. So primarily जो DFS uniform cost और iterative deepening के अंदर जो basic difference है, that's only in the state transition strategy. क्या आपने किस तरीके से नोड्स को evaluate करना है और किस तरीके से आपने नोड्स को सर्च करना है. The rest is almost the same.
Acha, uh, we now it's actually time to actually move to the heuristic search strategy or heuristic search strategy के अंदर let's take an example, and that example is primarily of again of say a navigation प्रॉब्लम. सो लेट्स से कि आपने अपनी प्रॉब्लम को ग्राफ की फॉर्म में या ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी एंड यू स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड एस एंड यू हैव goal somewhere in your search tree, and at present you are at node n. Okay, so you have already covered a part of your graph or a tree. Okay, and that region that you have already covered is represented by this triangle. Okay, so you have already incurred some cost from reaching from S to N, and we have already discussed कि इसको हमने G of N का नाम दिया, which is the path cost that you have already incurred. Okay. Okay, so if you have some information about the goal, let's say कि आपको ये बताया जाता है कि let's assume कि आप, I mean, you have some additional information, and we'll see that what type of additional information will be there. And say, as I told you, maybe we discussed this last time a little bit, but let's explain it further. That let's suppose that you are actually searching for a certain monument in a city, and you have already reached a particular place. You started from a particular place and you have reached a particular milestone, and there someone comes and actually tells you कि जी अच्छा आप अगर इस direction में move करें तो let's say if you move in towards the north from here, then you will reach your goal. So you have some sense of direction कि आपका goal जो है वो किस तरफ होगा, ठीक है. So that, so while present at n, you'll try to estimate, and this is an estimate because you haven't really covered the path from n to g, but you just have an estimate, and based on some information that you got from someone. Okay, and that estimate that you got that you got while being at n is what you call as the heuristic. Okay, so that and that estimate or heuristic that you have got while being at n is something that would help you in taking you towards your goal. Okay, so so you can eliminate all those paths, and based on that, so you'll evaluate all the paths that come out of n, and based upon the heuristic you can accept a few paths and you can reject a few paths, and you can say that okay, these are some of the paths that will not take you towards your goal, क्योंकि heuristically those paths are telling me that they are taking you away from the goal, whereas there are few other paths, एक कुछ ऐसे paths हैं which are heuristically correct. That means that those paths are such that they can take you towards your goal. And this is what you call, and remember कि आपने अभी traverse नहीं किया, this is just an estimate. So while being present at n, you are just estimating कि आपका goal जो है वो किस direction में होगा, and that estimation could be done based upon some information that you have got. Okay, so you have some information and you use that information. So you can anticipate a cost, or you can estimate a cost that might incur in future from n towards your goal, and that anticipated cost or that estimated cost is what you call as h of n. Okay, so h of n is an anticipated cost that you have calculated based upon some heuristic. So you apply a heuristic, and then you say that okay, my goal is in this particular direction, and this much cost is being incurred. So let's say मेरे पास कोई heuristic आता है, कोई rule मैं अपना बनाता हूँ, और उस rule के तहत मैं while at n, remember I haven't really covered this part from n to g, while at n I simply estimate the cost from it.
सो लेट्स से कि एक पाथ है जिसमें कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ इज 100, दैट्स एन एस्टिमेट, और एक और पाथ है जिसके ऊपर एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी लेट्स से 200 आ रही, ठीक है, और एक और पाथ है जिसके ऊपर आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 50 आ रही, right? So this is the estimated, these are the estimations that you have made while at n. You haven't really covered. So your estimate tells you कि अगर आप लेफ्ट पाथ पे चाहते हैं तो आपकी जो heuristic cost है वो 100 है, and that heuristic cost has been calculated based upon some information that you have got. और अगर आप राइट पाथ पे जाते हैं तो योर कॉस्ट इज 200, दैट दिस मच कॉस्ट विल बी इनकर्ड एंड दैट्स अगेन एन एस्टिमेट, और अगर आप स्ट्रेट डाउन इन द मिडल जाते हैं then the estimated cost would be around 50. So while at n, if you want to decide कि आपने इन तीनों paths में से कौन सा path choose करना है, तो obviously you will go for a path that has a lower heuristic cost. Okay, so you will choose that path with the lower heuristic cost. तो यहाँ पे what would happen in case of the heuristic search strategies कि आपकी जो total cost है, which is represented by f of n, that heuristic cost would comprise of two components, and those components would be, the first component would be the path cost that you have already incurred, which is same as the blind search strategies, which is g of n, plus this would have the heuristic cost, and heuristic cost is an estimate that you are making while being present at n. Okay, so this is what your total cost would look like. So अगर अब आपने कोई डायरेक्शन सेट करनी है और आपने डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है फॉर योर सर्च, you will look at the total cost, that is a combination of the path cost as well as the heuristic cost. Okay, so let's take an example. Let's try to study this with the help of an example. Suppose this is a map that you have got here, और आपने you started from this city. Let's say this was your start node. You started from this node, and this is your present node. So you have reached this city so far. ठीक है? So this would be n, right? And let's suppose कि आपका जो goal है, let's suppose this is your goal. So this is your G cost. This is your G node, capital G. ठीक है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉस्ट दैट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड, एंड दैट इज फ्रॉम योर स्टार्ट नोड टू योर प्रेजेंट नोड विच इज n, यहाँ तक जितनी कॉस्ट आई है, दिस इज व्हाट यू विल कॉल एज g ऑफ n. और उसके बाद यू विल ऐड द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट की एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि इस केस में ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या हो सकती है. लेकिन लेट्स से कि अगर आप ये पाथ चूज करते हैं, the heuristic cost along this path which is being shown now should be higher compared to the heuristic cost of this path, because ये path जो है, the second one is taking you towards your goal. So you have this path and you have got another path here, और फिर यहाँ से एक path ये भी जा रहा है. So let's call this A, let's call this B, and let's call this C. तो आप nth नोड पे हैं और वहां पे बैठ के आप ये देखना चाह रहे हैं ये तीन पॉसिबल पाथ्स हैं, तो इसमें मुझे किस पाथ पे जाना चाहिए. So you apply some heuristic and evaluate these three paths. अच्छा, ऐसे पाथ्स जो कि गोल तक आपको नहीं लेके जा रहे हैं उनकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए. सो लेट्स से कि इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो 10 आती है, इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, एंड दीज आर जस्ट आई मीन फिक्टिशियस नंबर्स. सो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इसकी 20 आती है, और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक कॉस्ट लेट्स से 5 आती है. सो ऑब्वियसली अगर आप कोई ह्यूरिस्टिक अप्लाई कर रहे हैं तो the heuristic, the path that takes you towards your goal, उसकी heuristic cost सबसे कम होनी चाहिए. ठीक है, so then out of these three possible paths A, B और C में B should primarily be
selected. उसकी obvious reason ये है कि उसकी जो heuristic cost है वो कम से कम है, और total cost उसकी from start to the goal would be G plus this heuristic cost that we have incurred. Right? ओके, सो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन, तो अब आपने बेसिकली करना ये है कि आपने हर नोड की एक ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन भी आपने करनी है, ठीक है. सो यू विल हैव टू डू अ ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन ऑफ ईच नोड विद रिस्पेक्ट टू योर गोल. अच्छा जी, ओके, द रीज़न फॉर दैट इज़, जी शायान का क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे पाथ्स को कंसिडर क्यों कर रहे हैं जो कि आपके गोल तक आपको नहीं लेके जा रहे. हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे पाथ्स को कंसिडर इसलिए आपको करना पड़ रहा है क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर देयर इज ओनली वन पाथ दैट इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है, राइट. लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास मल्टीपल पाथ्स हों विच माइट टेक यू टू योर गोल. तो उस केस में आप तमाम पाथ्स को इसलिए कंसिडर करेंगे क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पाथ हो जो जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम हो, ठीक है. तो यू डोंट एलिमिनेट एनी पाथ, ठीक है. ऑब्वियसली एक पाथ जिसकी कॉस्ट इनफाइनाइट है, दैट मीन्स दैट इज बेसिकली अ पाथ दैट विल नेवर टेक यू टुवर्ड्स योर गोल. लेकिन कुछ और पाथ्स ऐसे हो सकते हैं विच माइट टेक यू टू योर गोल बट इनकर अ हाई कॉस्ट, ठीक है. स्टैंडर्ड सर्च स्ट्रेटजीज के अंदर आपको जैसे ही पहला पाथ मिलता है विच कनेक्ट्स यू टू योर गोल, यू स्टॉप सर्चिंग, ठीक है. यहाँ पे यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द पाथ्स और हर एक की एफ कॉस्ट आप आइडेंटिफाई करते हैं. इसलिए आप किसी भी पाथ को उस वक्त तक डिस्कार्ड नहीं करते जब तक यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये ऑप्टिमल पाथ्स नहीं है या ये वो पाथ नहीं है जो कि आपको लोअर एफ कॉस्ट दे सकता है. सो यू कीप ऑल द पाथ्स इंटैक्ट. लेकिन the let's say elimination of a path would mean जो आप कह रहे हैं वो इसलिए आप कह रहे हैं कि let's say कि if someone, अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है. सो यू थिंक कि यहाँ से एक पाथ ऐसा निकलता है जो कि जो कि आपको गोल तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन बिकॉज दिस इज अ नेविगेशन प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम यू माइट स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दिस माइट बिकम योर स्टार्ट. सो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन आपको हर नोड की चाहिए होगी, ठीक है. तो जब आपके पास ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन हर नोड की आपके पास है तो फिर ऑब्वियसली उसकी एक ह्यूरिस्टिक कॉस्ट भी होगी. तो इसलिए यू हैव टू कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑफ ऑल द नोड्स. सो लेट्स से कि आप यहाँ से एक गोल तक पहुंचना चाहते हैं, दिस इज योर गोल, लेट्स सपोज. तो इस केस के अंदर जो जो पाथ आपका पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं वो एक ये पॉसिबल पाथ है और एक ये पॉसिबल पाथ है. तो इस केस में आप देख लें कि आपके जो ऐसे पाथ्स जो कि आपको गोल तक नहीं लेके जा रहे वो डिफरेंट हो जाते हैं. लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये पाथ आपको गोल तक ये नहीं लेके जा रहा? जैसे ही उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी तो you'll try to you will see कि अच्छा क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ, तो therefore this path is not taking you towards your goal, ठीक है. and if you exactly know the position of your goal तो फिर तो मसला आसान है, क्योंकि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे मूव. लेकिन this is what you do while you are actually planning. So someone gave you this information about the heuristic costs and now you are traversing this tree. तो उस ट्री को या उस मैप को आप ट्रेवर्स कर रहे हैं. सो यू मे स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट. तो इसलिए आपको हर पॉइंट के अगेंस्ट होलिस्टिक एवेल्युएशन जो है वो करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाई यू एक्चुअली कीप
ट्रैक ऑफ ऑल द पाथ्स, तमाम पाथ्स को आप ट्रैक में रखें. ऑब्वियसली दोज पाथ्स will never be evaluated or you'll never go along a particular path जो कि गोल तक आपको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि उसकी heuristic cost हमेशा ज़्यादा होगी या उसकी F cost हमेशा ज़्यादा होगी compared to the other paths. I hope this in this clarifies. If there is any question further. अच्छा, जी Ibrahim, you're right. So if your start point is your nth node, तो उस केस में you haven't really traversed the graph or the tree, therefore G उस केस में 0 होगी. At the start node, G will be 0 and the total cost will be equal to your heuristic cost. और अगर आप दूसरी तरफ गोल पे पहुंच गए हैं तो at the goal node आपकी heuristic cost 0 हो जाएगी because you are already present at the goal node. So remember heuristic cost की एक property है, it depends upon the heuristic itself कि वो क्या है, लेकिन heuristic cost की एक property ये है कि at your goal node the heuristic cost is 0 because you are already present at your goal node and the total cost will be equal to your path cost. That means the start से goal तक जितनी cost आपने incur की. Mars said that if we know where the goal is, haven't we already traversed the path to find out where it is? Okay, so if you already know where the goal is, तो फिर तो आपका मसला ही हल हो जाता है. लेकिन let's say कि someone is not given the location of the goal, लेकिन someone is given a map जिसमें आपके पास आपको path cost का भी पता है और heuristic cost का भी पता है, and you are asked to search the goal. ठीक है, you don't really know कि किस तरफ आपका गोल किस तरफ है. ठीक है, so person A calculated all the heuristic costs and the path costs and then person A gave that information to person B. Person A is aware कि गोल किधर है, लेकिन person B is not aware कि गोल किधर है. So now person B is actually left on this map कि अच्छा अब आप अपना गोल ढूंढे, and person B knows the heuristic evaluation of the nodes or the heuristic costs and also knows the path cost, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गोल किस डायरेक्शन में. So now person B will traverse this tree or a graph and will try to find out the goal. ठीक है, so this is how you can actually look at this problem. So there is a person with an information of heuristic cost and without knowing where the goal is can direct his or her search towards the goal. Okay. So how can you calculate the heuristic cost? ऐसा एक question ये है. So let's say कि आपके पास किस तरह से आप evaluate. So let's take this as an example. So let's say ये map है आपके पास, navigation. So you have got the map and you are here to design a heuristic for this so that कोई और ट्रैवलर जो है उसके लिए आसानी हो, तो आप किस तरीके से उसको करेंगे. ठीक है, how is it exactly implemented, ये that's another question, but let's say कि heuristic इसमें क्या हो सकता है. So I'll just pose a question to you कि let's say कि इस केस के अंदर heuristic map के केस के अंदर सिटी मैप के अंदर heuristic क्या हो सकता है. कीपिंग, so let's just keep things simple. So मैं आपको बता भी देता हूँ क्या हो सकता है कि आपकी गोल लोकेशन क्या है. So you are given a goal and then you have all the other nodes also present on that map. So okay, so one of the possibilities जो कि ऐसे बात कर रहे हैं वो ये है कि आप distances calculate कर लें. अच्छा, डिस्टेंसेस तो एक्चुअल डिस्टेंसेस आएंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्लीट रोड नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है एंड यू नो कि सिटी ए से सिटी बी तक कितना डिस्टेंस है. ठीक है,
So let's say कि you know कि city A से city B तक कितना distance है. So let's assume कि आपका you are present here, or there is a road that connects to another city, and there is say for example uh, this is, let's assume कि ये आपका goal है and this is your start node. ठीक है. और this is a sort of situation जो कि आपके पास है. तो आपने स्टार्ट नोड को एवेल्युएट करना है. सो लेट्स से कि मैंने इस नोड को एवेल्युएट करना है और इस स्टार्ट नोड की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकालनी है. स्टार्ट कॉस्ट की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट निकालनी है. जी का तो मुझे पता है. एंड व्हाट वुड बी जी? जी वुड बी द एक्चुअल डिस्टेंसेस. ठीक है. सिटी स्टार्ट लोकेशन एस से लेके 1 तक, और यहाँ पे लेट्स से 2 तक और फिर 3 तक. मुझे एक्चुअल रोड कनेक्शंस का पता है और मुझे डिस्टेंसेस का पता है. जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि एरट से सिबू तक जो डिस्टेंस है वो 140 है. और इसी तरह से बिटवीन दीज टू सिटीज द डिस्टेंस इज 118. इन दो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 80. सो दैट इज द डिस्टेंस दैट आई नो. लेकिन ये तो आपकी पाथ कॉस्ट निकालने में हेल्पफुल हो जाएगा. फर्ज करें आई एम एट फेगरस, तो इस केस में जो मेरी टोटल पाथ कॉस्ट अभी तक आई है दैट वुड बी 150 plus 90 if I followed this, 99 if I followed this path. ठीक है. तो this would be 140 plus 99, so that's the actual distance. ठीक है. लेकिन heuristic evaluation ये नहीं है. So distance will not be the heuristic evaluation. तो heuristic evaluation कोई ऐसी होनी चाहिए which would be an estimate, and that would help you take you towards your goal. So what do you think the heuristic evaluation would be in this particular case? Anyone? जी. नंबर ऑफ नोड्स ट्रेवर्स्ड. अच्छा, ट्रेवर्स, नंबर ऑफ नोड्स ट्रेवर्स्ड तो ऑलरेडी आपने ट्रेवर्स कर लिया है ना, तो ये तो एस्टिमेट ना हुआ. तो यू विल एग्जैक्टली नो कि कितने नोड्स आपने ट्रेवर्स किए हुए. तो ह्यूरिस्टिक इज ऑलवेज एन एस्टिमेट. सो लेट्स से कि आप अगर नोड 4 पे यहाँ पे, तो नोड 4 पे आपने यानी नोड 1 को ट्रेवर्स ऑलरेडी कर लिया हुआ. ठीक है. तो आपको पता है कि आपने इतने नोड्स ट्रेवर्स किए हैं बिफोर रीचिंग 4. तो ये तो एक्चुअली आपको नोन होगा ना. तो दिस इज नॉट एन एस्टिमेट. ठीक है. तो ये तो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट नहीं ये हो सकती. इट हैज टू बी एन एस्टिमेट. ठीक है. फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड. सो लेट्स से आप एस के ऊपर हैं, तो एस के ऊपर आपने अभी कोई नोड नहीं ट्रेवर्स किया. नॉट नॉट ट्रेवर्स नोड्स बिफोर गोल. आई मीन ये मुझे कुछ समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो. डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड ऑन अ पाथ. डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड ऑन अ पाथ मींस के अगर आपको गोल तक का डिस्टेंस ऑलरेडी पता है तो फिर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं. एस्टिमेट तो सिर्फ उस वक्त आएगा कि जब आपने एक्चुअली ट्रेवर्स नहीं किया एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू एस्टिमेट, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एस्टिमेट कॉस्ट क्या हो सकती है. टाइम इट टेक्स. तैमूर ने कहा है. अच्छा, फातिमा का जो फातिमा कह रही है डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड ऑन अ पाथ. Right. Okay, so let me just some info stored from the previous iterations. Acha. So let me just give you an idea. So one of the possibilities would be कि अगर आपने एस्टिमेट डिस्टेंस, यहाँ पे आपने डिस्टेंस का एस्टिमेट निकालना. डिस्टेंस का एस्टिमेट का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस का नहीं पता बिकॉज वी हैवंट रियली कवर्ड दैट, बट we need to know the estimate, and the estimate could be the straight line distance between two nodes. Okay, so map आपके पास है
लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स जो है ना, सो लेट्स से कि एस की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो होगी दैट वुड बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एस एंड जी, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, so straight line distance would always be an estimate, it won't be an exact cost, क्योंकि exact cost जो होगी वो that would be along a particular path, लेकिन अब आपको path का नहीं पता, लेकिन straight line distance could be one of the an estimate of your actual distance here. So 3 की heuristic cost क्या हो सकती है, that could be the straight line distance between 3 and g, ठीक है। 4 की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो कि एक्चुअल कॉस्ट के बराबर ही आ जाती है। 2 की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या हो सकती है, दैट कुड अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड योर जी, ठीक है। और 1 का भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन हियर कुड बी एन ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। सो लेट्स से कि मैंने एस को एस की ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन देखनी है, तो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन मुझे एक्चुअल कॉस्ट का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं एस से जी पे जाऊंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी, लेकिन आई हैव समवन हैज एक्चुअली टोल्ड मी कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। सो आई कैन यूज दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एज एन एस्टिमेट। तो अब मुझे एस से 2 पे जाना है या एस पे 1 पे जाना है, आई कैन मेक दैट डिसीजन बेस्ड अपॉन the straight line distance of 1 and g and 2g, ठीक है। तो 1 से g तक भी का भी एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा और 2 से g तक का भी एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। तो मैं s से मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने 2 की तरफ जाना है या 1 की तरफ जाना है, तो आई विल बेसिकली यूज दैट ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन और मैं ये कहूँगा कि अच्छा एस्टिमेट किसका काम है, एंड एस्टिमेट द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट किसका काम है, और ह्यूरिस्टिक इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सो मैं 1 से g तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पहले से किसी ने कैलकुलेट करके मुझे दिया, तो मैं 1 से 2 एस से 1 पे उसी वक्त मूव करूंगा जब 1 से g का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कम होगा कंपेयर टू s, ठीक है। सो आई एम यूजिंग दिस ह्यूरिस्टिक of straight line distance as a as an assistance, ठीक है, to take me in deciding कि मुझे S से 2 पे जाना है या S से 1 पे जाना है। Okay, so let's take another example. So in case of say let me just finish this. In case of a search strategy, especially navigation के अंदर straight line distances could be used as heuristic, and remember straight line distances आपके actual distances के बराबर नहीं होते, ठीक है। at the most वो उसके बराबर होंगे या straight line distance कम होगा, right? So this would be an estimate. So the search strategy in case of the search strategy which is the heuristic search strategy, आपके पास you look at the g cost which is the path cost, and you also look at the heuristic cost, right? So let me just come to this graph, and this would be an example जिसके बाद we can look at another example जिसमें heuristic cost. So let's say कि आपके पास this is an 8 puzzle problem, ठीक है। So 8 puzzle problem आपके पास है and this is your start node, ठीक है, and you want to play this game in a way okay, you want to go to the root node, so this is your the goal node, so this is your start node, ठीक है। अब यहाँ से ये 4 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या आप ये मूव कर सकते हैं, या आप ये मूव कर सकते हैं, या ये मूव कर सकते हैं, या ये मूव कर सकते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल मूव्स दैट आर देयर। अब इसमें से आपने कौन सी मूव सेलेक्ट करनी है, ठीक है। Well, the path cost of moving from this node to this node or moving from this node to this node is same. आपने primarily एक ही टाइल को मूव करना है, so the path cost is same, ठीक है। लेकिन इन चारों में से सिलेक्ट आप क्या करें, here the heuristic would play an important part, ठीक है। और इस केस में heuristic क्या हो सकता है, why are we adding heuristic function cost value?
cost isn't that provided to the algorithm. Acha, I'll come to this uh, later. लेकिन let's just try to find out कि इन चार possible costs moves के अंदर से, इन चार moves के अंदर से कौन सी move जो है you should select, given that the cost of taking any of these four moves is same. I mean, actual execution cost जो है of all these four moves is same. लेकिन आपने इसमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है. कैसे सेलेक्ट करेंगे? So you'll have to come up with some sort of a heuristic. So आपने इस गेम को काफ़ी दफ़ा खेला है लेट से, और आपको कोई ना कोई heuristic आपको समझ में आ जाता है. तो आप heuristic की बेस के ऊपर आप इन चारों मूव्स को evaluate करते हैं, और उसमें से आप कौन सी मूव करेंगे. साजिद ने कहा जी लेफ्ट और डाउन. वाई लेफ्ट और डाउन? क्यों? किस बेसिस पे आपने लेफ्ट और डाउन सेलेक्ट किया है? व्हाई नॉट अप? अप को क्यों आपने रिजेक्ट कर दी? ठीक है, कोई कहता है जी नहीं आप मूव करना चाहिए, उसकी कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए ना, इस मूव को सिलेक्ट करने की कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए. ठीक है, द क्लोजर वी गेट टू टू, Sarah, the closer we get to two, uh, अच्छा ठीक है. सो योर हेरिस्टिक इज, आपने जो जिस बेस के ऊपर सेलेक्ट किया है वो ये किया है कि जो आपका जो ब्लू टाइल है वो टू के कितने करीब है. एम आई करेक्ट? ओके, सो योर हेरिस्टिक सारा इज you want to move the blue tile towards 2. Now would that always be true? Or in other words, would you always go for a blue tile, taking a blue tile always closer to 2? Yeah, the heuristic would change. So if the heuristic would change with every move, then there is no point in using a heuristic. ठीक है, आपने at the end of the day basically गोल को ज़हन में रखना है. ठीक है, और गोल आपका क्या है? गोल ये है कि you have to put all these tiles in an order. ठीक है, so let's say कि गोल आपका जो है वो अगर ये है, let's say कि you have 1 2 3 4 and so on and so forth, और लास्ट टाइल आपके पास 8 है, यहाँ पे 5 आ जाता है, फिर 6 आ जाता है, 7 and 9, 7 8 और yeah, so there is one blue tile also. So let's say कि आपके पास blue tile आप यहाँ पे रखना चाहते हैं. So you may get blue tile closest to the smallest number out of the order. Okay. So we have to bring the blue tile closer to the number that is required next to the correct order. Okay. लेकिन let's say कि मेरे पास goal situation ये है, and this is my present. So let's assume कि मेरी present situation ये है. So I'll just compare this with my goal कि मैं achieve क्या करना चाहता हूँ. और एक सिंपल सा heuristic मैं बनाना चाहता हूँ जिसकी बेस के ऊपर मैं हर जो है वो मूव को evaluate कर सकता हूँ. So one simple heuristic could be you simply count the number of misplaced tiles. कितनी tiles ऐसी हैं जो कि misplaced? ठीक है, और अगर किसी मूव के करने से नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स रिड्यूस हो रही, यू गो फॉर दैट मूव. और अगर आप ब्लू टाइल को किसी ऐसी पोजीशन पे ले जाते हैं जहां पे नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स इंक्रीज कर जाती, यू विल नॉट गो फॉर दैट. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल हेरिस्टिक दैट यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है,
आपने जो ह्यूरिस्टिक अप्लाई किया कि जी जो स्मॉलेस्ट नंबर या क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ ऑर्डर कितने, दैट कुड आल्सो बी ह्यूरिस्टिक। तो आपके पास सिर्फ गोल नोड है, लेकिन आपने पहुंचना कैसे है उस गोल नोड तक ये आपको नहीं पता, लेकिन ह्यूरिस्टिक रूल कोई आपके पास ज़रूर है और आप अपने हर नोड को ह्यूरिस्टिकली एवेल्युएट कर लें और फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस नोड के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स कुड बी ह्यूरिस्टिक। अच्छा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, and that example is of the game, let's say टिक टैक टू गेम आप अक्सर खेलते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह का बोर्ड है, तो यहाँ पे अगली मूव क्या हो सकती है? अगली मूव ये हो सकती है कि क्रॉस वाला जो है वो क्रॉस इधर लगा सकता है, वो क्रॉस इधर लगा सकता है, वो क्रॉस इधर लगा सकता है। देयर आर ऑल पॉसिबल प्लेसेस जहाँ पे वो क्रॉस लगा सकता है, तो कहाँ पे क्रॉस लगाना चाहिए? ठीक है, अब ये सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हेरिस्टिक कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है आप, और हेरिस्टिक एवेल्युएशन। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज अ 2 प्लेयर गेम एंड दिस इज अ सिंगल प्लेयर गेम, जो कि एट पजल प्रॉब्लम है। सो दिस इज अ सिंगल प्लेयर गेम, लेकिन टिक टैक टू इज अ 2 प्लेयर गेम। तो 2 प्लेयर गेम के अंदर अब 2 प्लेयर गेम की ह्यूरिस्टिक्स आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी। सो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन ऑफ अ नोड वुड प्राइमरीली बी एन एवेल्युएशन that would help you in deciding कि आपकी next move क्या हो सकती है, and it's especially important in case of games। ठीक है, क्योंकि गेम्स के अंदर आप बेसिकली अपनी पॉसिबल मूव्स में से बेस्ट पॉसिबल मूव को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, सो मैपिंग के अंदर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कुड बी ह्यूरिस्टिक। ये 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स कुड बी ह्यूरिस्टिक। इन केस ऑफ द टिक टैक टो एक डिफरेंट हेरिस्टिक आप चूज कर सकते हो। आई लीव दिस एज अ क्वेश्चन फॉर यू कि यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि टिक टैक टो के अंदर हेरिस्टिक क्या हो सकते हैं एंड हाउ दैट हेरिस्टिक evaluation is different from a holistic evaluation of the 8 puzzle, right? Okay, so I think with this we'll end today's session. If there is any question. सर एक सवाल था। जी गो अहेड। सर हम लोग ह्यूरिस्टिक कॉस्ट तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है, तो हम उस कॉस्ट को हम अपने एल्गोरिदम के फंक्शन की कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे हैं? वो तो हमें गिवन है, वो तो हमें कॉस्ट एल्गोरिदम ट्रेवर्स तो नहीं कर रहा जो हमें कॉस्ट पड़ रही हो। नहीं, एल्गोरिदम की कॉस्ट, आई मीन आपको कॉम्प्लेक्सिटी का तो गिवन है ना, आप शायद कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो आप जी की बात कर रहे हैं, जी गिवन है। सर मैं बात कर रहा हूँ कि हम फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, तो जी ऑफ एन तो समझ लगता है बिकॉज वी हैव टू ट्रेवर्स दैट पाथ, राइट। बट एच ऑफ एन जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन होती है, तो नहीं, वो क्यों हम क्या उसमें हाँ ऐड करें? गिवन है, लेकिन दैट्स जस्ट एन एस्टिमेट, इट्स नॉट द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो अब आपके पास फर्ज करें आपने चूज करना है आउट ऑफ मल्टीपल पाथ्स, तो आपकी जी कॉस्ट तमाम पाथ्स की लेट से सेम है, दैट्स जस्ट एन अजम्पशन। तो आपकी सिलेक्शन किस बेस पे हो सकती है? आपकी सिलेक्शन जो है वो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट की बेस पे हो सकती है, और ह्यूरिस्टिक कॉस्ट आप किस नोड को जहन में रख के कैलकुलेट कर रहे हैं? गोल नोड को जहन में रख के कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम पास जो कि गोल ओरिएंटेड हैं उनकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ऑब्वियसली आपके पास कम आएगी। तो दिस वुड हेल्प यू इन सिलेक्टिंग अ पाथ आउट ऑफ ऑल गिवन पाथ्स। ठीक है, और जी कॉस्ट जो है दैट इज द कॉस्ट दैट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड, दैट मींस कि स्टार्ट से प्रेजेंट नोड तक जितनी आपने कॉस्ट इनकर की है, दैट इज समथिंग that is called the G cost. So total cost आपकी जो आएगी वो इन दोनों का एडिशन ही होगी ना, क्योंकि जैसे ही आप फर्ज करें गोल नोड पे पहुंच जाते हैं, तो गोल नोड पे पहुंच के उसकी ह्यूरिस्टिक
कॉस्ट क्या होगी, गोल की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या होगी, दैट वुड बी जीरो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी देयर, ठीक है, एट योर गोल नोड। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी, वो जी के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। सो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सर्च, तो आपकी एफ कॉस्ट जो है ना वो एक्चुअल जी कॉस्ट के बराबर ही होगी। सो एज फैक्टर एक्चुअली और एज कॉस्ट एक्चुअली डिमिनिशेस एज यू मूव टूवर्ड्स योर गोल, और आपका जो जी कंपोनेंट है वो बढ़ता चला जाता है, बिकॉज यू एक्चुअली कवर मोर ऑफ द ग्राफ और द ट्री, या ट्रेवर्स जो आपने किया वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, ठीक है। सो यू एड एज कॉस्ट फॉर हेल्पिंग आउट इन योर सर्च, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप सर्च कंप्लीट कर लेंगे, फिर एज फैक्टर विल गो टू जीरो, ठीक है। एज फैक्टर कम्स इन because you have partially completed your search, you have not completely you have not completely traversed uh, the given problem, इसलिए एज कॉस्ट उसके अंदर आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू सम एक्सटेंट। जी फार। थैंक यू सर। जी सर मैंने इज मैंने इट बस यही कंफर्म करना था। अ, जी फार आप बताएं। कि बेसिकली जो पहले भी आई थिंक माज ने सवाल पूछा, बेसिकली यही है कि ये जो कॉस्ट है ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क है ना, ये हाँ वो तो नहीं है ना? ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, दिस इज नॉट द कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं नहीं, दिस इज नॉट द जी कॉम्प्लेक्सिटी, जी ठीक है। दिस इज द ठीक है, इसलिए एक्चुअल वो कॉस्ट। कंफ्यूजन थी। हाँ नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉस्ट आप उस तरह से ना देखें, आप ये समझ लें कि इस कॉस्ट को आप टाइम की टर्म्स में देख सकते हैं। इस कॉस्ट को आप लेट्स से इफ यू आर नेविगेटिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, ये कॉस्ट जो होती है वो फ्यूल कॉस्ट हो सकती है। आई मीन, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। Actual complexity of the algorithm can be calculated separately. This is cost in terms of time या in terms of fuel। अगर आप navigation कर रहे हैं, let's say कि ये games आप play कर रहे हैं, तो इसमें number of steps जो हैं, this would be the cost जो कि हम कह सकते हैं कि ये हम इस cost की बात कर रहे हैं, not the complexity. You have to separate it out from there, from that. जी साजिद। सर जो हमने एच ऑफ एन निकाला, ये एक हमने रूल बनाया है ना कि एक ह्यूरिस्टिक रूल है, इस बेस पे जी कॉस्ट कैलकुलेट जी जी, किया है, बिल्कुल बिल्कुल एस्टिमेशन। ऐसे ही है। एक आपने अच्छा रूल की बेस ठीक। के ऊपर उसको एवेल्युएट कर लिया। जैसे ये 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर रूल ये है कि आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स कितनी है। आपने आपका गोल आपको गिवन है कि अच्छा इस बोर्ड को इसमें कन्वर्ट कर दो, तो यू ऑलवेज कंपेयर इट विद योर गोल एंड फाइंड आउट एन एवेल्युएशन। जिसमें नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स ज़्यादा होंगी उसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक, थैंक यू। ओके, ठीक है जी, इंशाल्लाह। सो मीट नेक्स्ट टाइम। अगला क्विज कब होगा? अगला क्विज जो है वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हो जाए, ठीक है। ओके, सो द टीएस वुड अनाउंस दैट, ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट। और वो होगा भी तो वो हम करेंगे ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज तक, ठीक है। I'll just tell them. Okay.